बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्डोल या aldol condensation. It is defined as aldehydes containing alpha hydrogens under self-addition in the presence of base to form product called aldol. Aldehyde all mean hydroxyl. This aldol is bifunctional. This is bifunctional group product. Second definition is the condensation in which an enol or enolate ion react with carbonyl compounds to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. These products after dehydration forming enone, which is ketone, or enal, which is aldehyde. This is the journal example. This is aldehyde and this is aldehyde. इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है. Now look here. This is ketone. इस कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के बाद अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है. इस ग्रीन कार्बोनाइल कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन. तो इस कार्बन के साथ एडजेसेंट ये कार्बन है और इसके साथ ये भी है, तो इसको भी अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको भी अल्फा कार्बन कहते हैं. इसके बाद जो कार्बन होते हैं वो अल्फा बीटा गामा सो ऑन. सो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन. सिमिलरली इसमें सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि इसमें एक अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा कार्बन नहीं है. देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. So this is the general example. 2 molecule of aldehyde having alpha hydrogen. When both react in the presence of base, forming alpha beta forming beta hydroxyl aldehyde या बीटा हाइड्रोक्सिल कीटोन. इसके लिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ बेस followed by enolate ion formation. तो टेक दिस aldehyde acetaldehyde, इसको ले ले. This hydroxyl of the base will take 1 hydrogen from this black aldehyde forming enolate. This hydrogen will leave this CH2 as प्रोटॉन और इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा कार्बन पे. तो this is a type of negative bond and this is known as enolate, and this enolate में ये CH2, this is nucleophile. Now this nucleophilic enolate carbon will react with electrophilic carbonyl carbon of next aldehyde. तो this carbon will make bond with this carbon और ये bond this will shift toward oxygen forming this product. Next step में protonation of this carbon, protonation of this oxygen, proton from water and hydroxyl will replaced here. So this proton will protonate this oxygen making this bond which is known as aldol. This is aldehyde and this is ol, so this is known as aldol. Now the dehydration in this aldol, this ये हाइड्रोक्सिल, इससे हाइड्रोक्सिल और इससे एक कार्बन हाइड्रोजन ले रहे making water and resulting double bond. Now this product is known as enal. En stand for double bond and al stand for aldehyde, so this is known as enal. You may try the same mechanism for these 2 ketone and the product will be known as ketol or after dehydration enone.
Application of aldol condensation, formation of beta hydroxyaldehyde, formation of beta hydroxyketone, formation of alpha beta unsaturated aldehyde, formation of alpha beta unsaturated ketone, and even acrolein formation. Acrolein is used in manufacturing of insecticide, and this is the structure of acrolein. Thank you for listening.